Hi, ladies and gentlemen. Good evening. Today is Senior Citizens Day. Perhaps not many of you know, क्योंकि इस दिन को ज़्यादा celebrate नहीं किया जाता. There is Father's Day, of course. There's Mother's Day. और हमने सबने senior citizen discount के बारे में सुना है, especially travel tickets या higher rate of interest जो banks offer करते हैं. But do you know why is that? It is a way of saying to them that they've done enough. And all of these years, they've given. Now, this is a small token of appreciation from our side to show gratitude towards them, towards their contribution towards our society. Similarly, all of us here today owe it to them in some way or the other, to our parents and our grandparents and our teachers, because they're responsible for where we are today. In our journey, it's their contribution and their guidance. Our parents have given us everything we asked for. It is now time for us to take care of them as they grow old. We generally associate old age with the common health conditions like knee pain, heart diseases, high blood pressure, blood sugar, blurry vision, hearing issues. Sometimes we talk about frequent urination. और सबके घरों में ये बातें होती हैं. Statistics say that most people suffer from one or the other disease in their old age. This brings me to the topic of discussion today. Is being active and fit not possible as you grow old? Or is there a way to better manage these conditions and live a healthy life even as you become a senior citizen? Before we go further, I just want to tell you guys that my father retired as a Lieutenant General at the age of 60. और हमें तो बहुत एकदम fit लग रहे थे. And now in the last 6 years, we've seen that he's maintained his full routine, and I can see that him being active makes a difference versus other people who are not active. But आज हमारे साथ कुछ ऐसे दिग्गज लोग होंगे जो इस पे हमें एकदम डिटेल में बता देंगे. I was going through a report which actually told me that almost 1.3 crore people in India suffer from rheumatoid arthritis. And prostate cancer is the second leading site of cancer among men in India. Hence, to discuss the problems related to bone health, we have with us Head of Department Orthopedics and Joint Replacement Surgery from Max Super Speciality Hospital, Dr. Anil Arora. And to throw light on prostate conditions, we have with us Director of Urology from Fortis Hospital, Dr. Dushant Nader. We also have with us Dr. Babatosh Mishra from Niva Bupa Health Insurance, who heads the claims underwriting and products department in the company. Let me actually give you guys a quick introduction of all our three esteemed panelists. Professor Anil Arora has an experience of more than 32 years and has performed, check this out, more than 10,000 joint replacement surgeries. Yes, sahi suna aapne, 10,000 se zyada in the field of orthopedics and joint replacement. Formerly, he was a professor of orthopedics in Delhi University College of Medical Sciences. He is currently the head of department and principal director, Department of Joint Replacement Orthopedics, Max Super Speciality Hospital, Patpatganj, Delhi. He has won multiple awards and recognitions through his career. उनमें से कुछ मैं आपको बताता हूं, दो most notable ones. Guinness World Record holder for largest gathering of joint replacement patients in 2018, and Limca Book of Records holder in 2017 for making a lady who was bedridden for 30 years. She was walking by him doing a total knee replacement surgery on her. Can you imagine that? Apart from these accolades, he has been awarded as Most Trusted Knee and Hip Replacement Surgeon of the Year multiple times. Zordar Taliyan. Thank you. Our other panelist, Dr. Dushant Nader, is an expert in endourological procedures, laparoscopic urology, and renal transplant. He has many challenging surgeries to his credit. A thorough professional with 20 years of varied in-depth experience in urology, Dr. Nader has been instrumental in doing some groundbreaking work in his field. Zordar Taliyan. So happy to have you here, sir. And our third panelist is Dr. Babatosh Mishra, who is an insurance industry veteran with almost 2 decades of experience.
He has been actively involved with industry bodies like FICCI, CII, and the regulator on many industry initiatives. Several products developed by him have won accolades in the past. Ladies and gentlemen, please welcome our esteemed panelists. Hi, guys. Hi, sir. Hi, everybody. Hi, everyone. Hi, Dr. Arora. Hi, Dr. Mishra. Hi. And hi, Dr. Nader. How's it going? Everything's fine. All well, yeah. Good. Thank you. All good. Thanks, Arvind. मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ. सबसे पहले तो I'm very happy that we are in the same zone. एक ही जगह पर हैं. And these days, you must have been used to these on the internet meetings. Is it something, because the last few years, and I just want to take my own time to say this, I want to thank all the doctors, everybody around, because it's difficult, because if physically you have to work, then you have to come back to your families, tough times, and then you're also taking time out like this, meeting people across the globe. How has it been for you guys? Then Vijay, see, for us, we have three areas, even in medical sciences. One is clinical, one is teaching, one is research. This is part of academics, what we are doing now. And whatever time is left is family time, your own health, etc., 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 etc. Wow. So we have to keep a balance in, work-life balance. We try to find time. We tend to spend quality time with our families, with our senior citizens. Yeah. We have aging parents at home who are looking forward to talk to us for 5-10 minutes in the night whenever we come back. So we have to somehow balance it. It's part of game. It is part of the game. What about you, Dr. Nader? See, we're used to multitasking. And every surgeon, once he's putting a stitches, he just comes to know कि आगे केस में क्या करना है, OPD में क्या चल रहा होगा अभी. Once you finish the job, and being married, अभी आपको ये लग रहा है कि एक बार मीटिंग से बाहर निकलूंगा तो कुत्ता भी घुमाने लेके जाना है. So multitasking has to come. It's a part of our lives, and we have been trained right from our education when we were MBBS students. So it's in there. Okay, great to have you guys here. And I'm going to start with my first question for Dr. Mishra from Niva Bupa. Sir, are you ready? Yes, Ranjay. Sir, all of us agree that senior citizens hold the collective wisdom of any society. ये बात सच है. And the empathy levels of any society can be gauged by the way senior citizens are treated by that society. आप कैसे अपने बड़ों का आदर सम्मान करते हैं, कैसे उनका टेक केयर करते हैं, उससे आपकी सोसाइटी के ऊपर एक आपको पता अंदाजा आ जाता है. As one of the fastest growing health insurance companies, what does it mean to you, Dr. Mishra? A very relevant, very relevant question, very relevant topic. I think nothing can be as important as, how do we collectively as a society treat our senior citizens? And when we say senior citizen, एक problem उसमें ये होती है कि ऐसे लगता है कि we are talking about a segment of population. Whereas the reality is senior citizen is a part of our households. बिल्कुल. Our parents, our relatives, those are enough number of senior citizens that in the household that you see, and a collective group of all of them forms the senior citizen as a community, as a certain demography in this country. And I must tell you, the very interesting fact also is that we are a very young country. Yes. That also means our senior citizens are possibly a smaller percentage, but suddenly, before we realize, in 2 decades, we'll have a massive demographic group, which will be seniors. Because the current 30s and 40s, the masses, which is this young, will become senior citizens in less than 2.5 decades, right? From Niva Bupa's point of view, we've always been very conscious. So from the very first products, we not just built products for senior citizens, but every product that we have has components which would help senior citizens of this country, elderlies of this country. In all our previous products, even mandated by regulator, the minimum entry age has to be 65 years. But as people continue to live longer, India has higher life expectancy now. 65 was inadequate. So in our products like Health Companion, there is no age limit to get into that fold. So 80, 85, 90-year-old can still become a part of this. But we thought that's not good enough. So we created a very customized product, specifically taking into account
the challenges faced by the elderly and the senior community, and we co-created with a lot of research conducted, and we named, rightly so, this product as Senior First, because for Niva Bupa we do genuinely believe that seniors come first. अब देखो ना, जैसे एक टाइम पर, एंड दिस इज अगेन अ पर्सनल थिंग, इट्स नॉट अ किसी और की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, मेरा ही व्यू है. एक टाइम पे ऐसा था कि बाहर जाना है, वेस्ट में जाना है. और क्यों जाना है वेस्ट में? क्योंकि जब बूढ़े हो जाएंगे ना तो वहां पे रिटायरमेंट अच्छा होता है, वो आपका ख्याल रखते हैं, बिकॉज उनका मेडिकल सही है, ये सही है, ऐसी बहुत सारी बातें होती है. am I wrong? ऐसी बातें होती थी. अगर वही सिक्योरिटी, वही केयर आपको अपने देश में, जहां पर आप अपने बच्चों के साथ रह सकते हैं, बच्चे अपने पेरेंट्स के साथ रह सकते हैं, एंड दे कैन बी विद देयर सोशल सर्कल, बिकॉज टेकिंग योर पेरेंट्स अवे, सम पीपल हैव द रिसोर्सेज कि वो उनको कहीं और सेट करते हैं जहां पे उनका मेडिकल ऑलरेडी इज टेकन केयर बाय द गवर्नमेंट, राइट? बट देयर वो बच्चे भूल जाते हैं कि खुद तो वो वहां पे अपने काम के लिए गए थे. पेरेंट्स आर separated from their whole social circle. They have grown with these people, they have retired, and they've also planned. And I see that more and more people in my generation, I'm now in my late 30s, we are concerned about our parents, and if their insurance is set, सिर्फ वही चीज, तो हम लोग थोड़े से ऐसे स्ट्रेस फ्री हो जाते हैं कि ठीक है, छुट्टी पे जा रहे हो, कोई बात नहीं, यहाँ पे हो, चंडीगढ़ में हो, चलो ठीक है, बाकी कुछ थोड़ी सी भी बीमारी हो जाती है, कोई, that's it, because they were their friends, everybody's insurance set. I'm also in this journey, today here also learning. हमारे साथ जितने भी लोग जुड़े हैं, हम सबके घर में, जैसे सर ने बोला कि कभी कभी ना फौजियों के बारे में बात होती है, और अगर आपके घर में फौजी नहीं है तो इट्स डिफिकल्ट टू रिलेट. लेकिन सीनियर सिटीजन, लाइक सर सेड, हर घर में आपके पेरेंट्स सीनियर सिटीजन, आपके दादा दादी हैं, आपके रिलेटिव्स हैं. सो दिस इज अ हर घर की कहानी है. थैंक यू सर फॉर योर आंसर. Now, I'm going to ask Dr. Arora from Max. Sir, yes. कुछ सवाल है मेरे पास आपके लिए. Please. Now, in the first section, I would like to talk about a condition from which most of the senior citizens suffer. Knee pain. मतलब हमने बचपन में ऐसे अपने दादी परदादी को भी देखा है कि घुटनों में दर्द होता ही है. मतलब वो ऐसा हो गया कि आप बूढ़े हो रहे हो तो घुटनों में दर्द शुरू हो ही जाएगा. Right? Most people in their old age suffer from arthritis. So first of all, Dr. Arora, to begin with, can you please tell our audience what is the difference between osteoarthritis and rheumatoid arthritis? Thanks very much, Vijay. Let me clarify it. देखिए, osteoarthritis का मतलब है जोड़ का उम्र के हिसाब से घिस जाना. अच्छा, ये बीमारी नहीं है. मेरा अगर बाल सफेद होगा तो बीमारी नहीं है, राइट? ये होना है. इससे अगर मुझे दर्द होगा, डिसेबिलिटी होगी, फंक्शन चला जाएगा, तो ये बीमारी का रूप हो गया. This comes from wear and tear. Wear and tear. So osteoarthritis is age-related wear and tear of a joint. Knee joint is the biggest joint of body. So it most commonly suffers osteoarthritis. सबसे कॉमन घुटने में है, क्योंकि बड़ा जोड़ है, वजन लेता है. जबकि रूमेटॉइड आर्थराइटिस, जिसको हिंदी में गठिया पाए बोलते हैं, इट इज अ डिजीज. ये एक बीमारी है. ऑस्टियोआर्थराइटिस एजिंग के साथ वेयर एंड टियर है. रूमेटॉइड आर्थराइटिस एक बीमारी है जिसको गठिया बोलते हैं. वेस्टर्न वर्ल्ड में 8% पॉपुलेशन को ऐसा मानते हैं कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, एंड ऑलमोस्ट सिमिलर हिंदुस्तान में भी ऐसा ही है. पर रूमेटॉइड आर्थराइटिस के मुकाबले ऑस्टियोआर्थराइटिस से जो नी पेन है वो 20 गुना ज्यादा है. जो सबसे कॉमन बीमारी है वो ऑस्टियोआर्थराइटिस है. 20 गुना ज्यादा मरीजों में ऑस्टियोआर्थराइटिस होगी जो उम्र के हिसाब से घुटना घिसेगा. सो फर्क क्या है? ऑस्टियोआर्थराइटिस एज रिलेटेड, वो उम्र के साथ सबको होना है, घुटना दर्द करेगा. रूमेटॉइड आर्थराइटिस एक बीमारी है जो गठिया है, जिसका इलाज चाहिए अलग से. ठीक है, उससे भी घुटना खराब हो जाएगा. अब तो एज अ फॉलो क्वेश्चन मेरे पास और सवाल है. बोलो प्लीज. Some people in the audience would like to know if fertility treatments trigger rheumatoid arthritis. No evidence in literature. हम लोग जो भी बात करते हैं या तो एक्सपीरियंस बेस करते हैं या साइंटिफिक बेस करते हैं या लिटरेचर की बेस करते हैं. लिटरेचर में ऐसा नहीं है. ऐसा माना जाता है कि फीमेल हार्मोन्स दे प्रीडिस्पोज यू फॉर रूमेटॉइड. फीमेल्स में गठिए की परसेंटेज ज्यादा है आदमी के मुकाबले, कुछ गुना ज्यादा है. फीमेल्स आर मोर प्रोन
मैं गठियावाई की बीमारी की बात कर रहा हूँ, मैं ऑस्टियो की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं रूमेटॉइड की बात कर रहा हूँ। वो फीमेल्स में ज्यादा है, फीमेल हार्मोन्स ट्रिगर करते हैं, पर ऐसा लिटरेचर में कोई एविडेंस नहीं है कि फर्टिलिटी के ट्रीटमेंट से आपको रूमेटॉइड ट्रिगर हो जाएगा। सो नो साइंटिफिक एविडेंस, आंसर इज नो। No. Okay. It is seen that women are more likely to develop osteoarthritis. Why is that so? And how much roles, genetics जो है, वो बहुत बोलते हैं कि तो आपके जीन्स में, how much role does genetics play in people developing this condition? वैसे आपने पहले जवाब में थोड़ा सा बता दिया इसका, but yes, that's right. So मैं क्लैरिफाई करता हूं फिर। लेडीज में रूमेटॉइड ज्यादा है, और अपने देश में चूंकि लोग डॉक्टर्स के पास दिखाने नहीं जाते हैं, सब ये मानकर घर में बैठ जाते हैं कि मेरा घुटना तो उम्र से घिसना था, सो घिस गया, मैं घर पे बैठ गया, मैं डॉक्टर को नहीं दिखाया, मैंने को तेल लगा लिया, मैंने को टीवी में देख के दवाई ले ली, कुछ भी कर लिया, गरम पट्टी बांध ली, कोई पोल्टिस लगा लिया, दादी से पूछ लिया, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। हकीम के पास चले गए, और वो मसलची नहीं होते जो आते हैं घरों पे, पहलवान जी के पास चले गए, और वो मसाज करके निकाल देते हैं। एनीवेयर सो हमारी कम्युनिटी में बहुत अनडायग्नोज्ड रूमेटॉइड घूम रहे हैं। बहुत सारे लोग जिनको थोड़ा बहुत गठिया बाय का असर है, वो अपने आप को घिसावट का घुटना मानकर घूम रहे हैं, डॉक्टर को नहीं दिखाते। और जेनेटिक्स इसमें रोल प्ले करता है। तो जेनेटिक्स जो है दोनों में रोल प्ले करता है। अगर आपकी फैमिली में ये हिस्ट्री है कि आपके पेरेंट्स को अर्ली आर्थराइटिस हो गया था, तो चांस है कि आपको भी होगा। क्यों? आर्थराइटिस में क्या होता है? आर्थराइटिस में हमारी जो जोड़ की चिकनाई है, जिसको कार्टिलेज बोलते हैं, एक तो इस डे पे मैं थोड़ा और क्लियर कर देता हूं, जो जोड़ में चलने वाली चिकनाई है वो कोई तेल, ग्रीस, चर्बी नहीं है। बुजुर्ग आदमी ऐसा, साहब मेरे घुटने की ग्रीस खत्म हो गई है, आप इंजेक्शन करके ग्रीस भर दो इसके अंदर। इसमें कोई ग्रीस नहीं होती है, ऐसे कोई तेल या चर्बी नहीं होती है। तो ऐसे मेरे पास आते हैं लोग आपके पास की, बहुत सारे आते हैं। इसलिए मैं एक मॉडल लाया हूं दिखाने के लिए साथ में, बिकॉज आई हैव बीन टीचिंग। मैं एक मॉडल दिखा रहा हूं आपको, अगर मेरे आप इलाज कर देंगे। सी दिस इज मॉडल, नी मॉडल। हाँ जी, इस पे एक लेयर है, परत है ये, राइट? दिस परत है, दिस इज कार्टिलेज। चलने के लिए ये जिम्मेदार है, राइट? इसमें ये चलने की चिकनाई है। सो जब ये घिस जाएगी, जैसे आपकी गाड़ी के रिम के ऊपर टायर होता है, ऐसे बोन के एंड पे ये कार्टिलेज होती है। जब ये घिस जाएगी तो हम बोलेंगे जी आर्थराइटिस हो गया। उम्र से घिसा, ऑस्टियोआर्थराइटिस। गठिया की बीमारी से घिसा, रूमेटॉइड आर्थराइटिस। सो दोनों में ही जोड़ की चिकनाई खत्म होगी और जोड़ खराब हो जाएगा। और तो जेनेटिक्स प्ले करती है रोल, थोड़ा बहुत इसके अंदर करती है। और स्पोर्ट्स इंजरीज अलग है, जैसे मेरे को मेनिस्कस में इंजरी थी और एसीएल अलग है मेरा, वो चोट से है। वो चोट से और जो ओवर ए पीरियड टाइम जो घिसाई, या तो रूमेटॉइड की वजह से या उम्र की वजह से, ये जो लिगामेंट चिकनाई, कार्टिलेज जो कम होगा, जो आपको इंजरी हुई वो लिगामेंट है। बिल्कुल, वो एसीएल के अंदर छल्ले हैं, मेनिस्कस है। दे आर शॉक एब्सॉर्बर्स, स्टेबलाइजर्स, सो दे गेट डैमेज्ड बाय स्पोर्ट्स इंजरीज, बट वियर एंड टियर दिस कार्टिलेज एट द एंड ऑफ द बोन। वेरी राइट। ये आपने रखा हुआ था अपने पास कि आपके पास हमेशा ही होता है? कोई अगर आपको पूछे कि पढ़ाने वाला आदमी भी रखे रहते हैं, तो बेटा ये तेल नहीं, चिकनाई का मामला है। They are with me majority of times in my clinic, everywhere with me, because patients आगे जब बात करते हैं, डॉक्टर साहब आप तेल का टीका लगा दो इसके अंदर, हम समझाते हैं तेल नहीं है इसमें, चलने की चिकनाई कार्टिलेज है। डॉक्टर नादर, आप भी ऐसे कुछ, do you carry something with you like this? देखिए, मेरे डिपार्टमेंट में ये परमिट नहीं करेगा मेरे को। मैं यूरोलॉजिस्ट हूँ, मैं ऑर्गन इज डिफरेंट, my organ is different, so ये totally permissible नहीं होगा। That's why I asked you. Okay, so I have no such models with me, so I want to say one thing before I go forward. Ki of course, being in OTs and stuff like that, and all of you guys, but also for some reason Indian doctors have great sense of humor. ये सिखाया जाता है आपको कॉलेज में कि थोड़ा सा फनी में होना, ताकि पेशेंट्स थोड़े at ease हो जाएं, ऐसा होता है? नहीं, आई थिंक सेंस ऑफ ह्यूमर रहना जरूरी है। आप इतने मॉर्बिडिटी और मोर्टेलिटी से सराउंडेड होते हो, सब जगह आपको हॉस्पिटल में दुख नजर आता है, आप ही मायूस बैठे रहो तो पेशेंट के बेचारे क्या हाल होगा। इट्स राइट टू हैव बिट सेंस ऑफ ह्यूमर। और 40 वाला आदमी को वैसे ही होना चाहिए, कुछ तो हंसने के लिए, मतलब जिसके साथ भगवान ने मजाक कर दिया वो उसको मजाक क्या होना चाहिए। नहीं, आई थिंक यू नीड टू हैव दैट सेंस ऑफ ह्यूमर। रॉबिन विलियम्स की एक बड़ी अच्छी मूवी थी पहले, जिसमें वो as a doctor का रोल प्ले किया। It's a beautiful movie that tells about having a bit of humor in medicine. Why not? पेशेंट अगर मुस्कुरा के हंसता हुआ जाएगा, अगर डॉक्टर थोड़ा ऑपरेट करते हैं और वो भी मुस्कुराए नहीं, पेशेंट भी दर्द में है,
तो दर्द से सराउंडेड है, आप वो मुस्कुरा देते हैं, पेशेंट तो आधा वैसे ही ठीक हो गया। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि डॉक्टर रोड़ा पहले जोक सुनाते हैं और उसके बाद वो तेल डालने वाला जोक सुनाते हैं। हमारा मरीज सिर पे दुख की पोटली लेके आता है, राइट? हमारा काम अपना वजन डालना नहीं है उसके ऊपर, एग्जैक्टली, थोड़ा सा वजन लेना है उसमें से। Rightly said. See, Ranvijay, we both are surgeons, and the moment patient enters our room, he's so stressed out कि डॉक्टर ने जाने कब बोलेगा मैं चाकू चलाऊंगा तुम्हारे ऊपर। You're right. So they are so stressed out. So first of all, see, we don't treat knees or bones or hips or joints. We treat human beings, right? That's most important. The day we all doctors understand that we are treating human being, medicine is a beautiful fraternity, beautiful to practice. Well said. So इसी के साथ sir, thank you so much for your inputs. अभी Dr. Nader, I have actual serious questions. हाँ जी. You know, in the next session, I would just like to discuss all about the prostate health. एक ऐसा टॉपिक है जिसके ऊपर ज्यादा मतलब इंपॉर्टेंस नहीं देगी, प्रोमिनेंस नहीं है, and it's startling to know that so many of our senior citizens suffer from prostate related problems. तो मेरा सवाल ये है कि can you enlighten our audience about some of the prostate related conditions and tell us what and how to detect prostate enlargement? See, Ranvijay, if you talk about senior citizens, that is, senior citizens was also include men and women. लोग भी हैं, मर्द भी हैं और लेडीज भी हैं उसके अंदर. If you talk about OPD, हमारी OPD में, एक हॉस्पिटल OPD में सीनियर सिटीजन को यूरोलॉजी की प्रॉब्लम कितने परसेंटेज वाले लेके आते हैं? कम से कम दैट मे बी कंस्टिट्यूट्स अराउंड 1/3. 30% लोग 100 में से यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम लेके अस्पताल में एडमिट होते हैं. एंड व्हेन यू टॉक अबाउट मेन एंड लेडीज, तो यू क्लासिफाई दिस सिम्टम्स एज लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट सिम्टम्स, कि पेशाब में दिक्कत लोगों को ज्यादा है, लेडीज में भी और मेन में भी. लेडीज में अलग तरह की प्रॉब्लम है, मेन में उसको क्लासिफाई कर दिया प्रोस्टेटिक डिजीज. अब प्रोस्टेट ऐसा ग्लैंड है ह्यूमन बॉडी में जो उम्र के हिसाब से बढ़ता है. दैट इज ओनली ग्लैंड इन द बॉडी जो उम्र के हिसाब से बढ़ेगा. अगर वो बढ़ेगा तो 3 तरह की प्रॉब्लम करेगा. या तो वो जिसको कहते हैं बेनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया, BPH जिसको बोलते हैं, कि अब प्रोस्टेट ग्रो कर गया, ग्रो करने के बाद में, क्योंकि इट इज ए like a chestnut shape and the size of a chestnut, और it's like a donut again. तो यूरिन का पैसेज जो होता है वो प्रोस्टेट के अंदर से होते जाता है. जैसे वो ग्रो करेगा आपको यूरिनरी प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाएंगी. वो ऑब्स्ट्रक्शन भी हो सकता है कि आपको यूरिन में रुकावट हो सकती है, आपको यूरिन फ्रीक्वेंसी लग जाएगी, आप यूरिन कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा, रात में आप ज्यादा जाएंगे. फिर अगेन देन इट कैन लीड टू कॉम्प्लिकेशन इन द सेंस कि आपको यूरिन में ब्लीडिंग होने लगती है, यूरिन आपका ब्लॉक हो सकता है, स्टोन बन सकते हैं. सो मच सो कि अगर आपसे ज्यादा टल गया तो किडनी फेलियर में भी जा सकते हैं. सेकंड प्रॉब्लम वुड बी कि यही जब बेनाइन आप शब्द बोलते हैं तो दिस इज इट्स अ बेनाइन, इट इज नॉट अ कैंसरस. इफ यू टॉक अबाउट अदर एक्सट्रीम, 10% people, 1 to 5% in fact in India having symptoms of a prostatic enlargement may be suffering from something called as prostatic cancer. So prostatic cancer is other part of the prostatic enlargement which is cancerous. And third would be the infections that are caused by either of them that bring the patients to the hospital, that are called prostatitis. So you can classify is that as BPH, this is benign, cancerous, or infections caused by either of them. Okay, sir. Dilbag Singh from Meera Road. His name is Dilbag Singh Padme. Dilbag Singh Padme from Meera Road. He wants to know, how can the prostate enlargement be controlled and reduced? See, it is part of aging, so you cannot control the prostatic enlargement. But yes, in case you suffer from a prostatic enlargement, you need to first go to a urologist who will do a basic test in terms of examination and get an ultrasound and few other tests. If your ultrasound shows your prostate is enlarged, is around more than 30 grams, more than 40 grams, there are certain drugs that can be given with due understanding of the side effects and complications that can reduce the size of this prostate by around 30% in a course of 6 months to 1 year. But there is no exercise that can reduce the prostate, and you cannot stop this aging. जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ेगी तो ये कुछ चीजें आएंगी ही आएंगी. तो दिलबाग सिंह जी, मैं ये बोलना चाहूंगा कि जल्दी से डॉक्टर के पास जाना सबसे इंपॉर्टेंट है. उसके बाद जो डॉक्टर बोले वो करें. राइट सर? राइट.
Next question. So, what are some of the causes and common symptoms of prostate cancer, and what should one do if one suspects a prostate condition? See, commonly, once you talk about a early detected prostate cancer, so the problem is early detected prostate cancer never causes any symptoms. So we go and we do a blood test, and that is called a serum PSA, prostate specific antigen. So that's one of the best tumor markers in the world. So in fact, a urologist would recommend everybody, the moment you touch 50, मुझे नहीं पता आपकी उम्र क्या रणविज है, बट जैसे ही 50 के करीब पहुंचने वाले हो, एक ब्लड टेस्ट जरूर करा लेना. बहुत दूर एज सीरम PSA. अब right? तो दोस्ती हो गई सर आपके साथ. आप एक पार्टी में बुला के कर ही लेना, मेरा क्या है. हाँ, उसमें एग्जामिनेशन भी आता है, उसे रेक्टल एग्जामिनेशन ही बोलते हैं. अच्छा नहीं ठीक है, वो 50 के बाद ही करा लेंगे. So इसलिए so once you have this test that is available, that is इंडिया में तो आप आराम से यूरोलॉजिस्ट पे जाके मिल सकते हैं. टेस्ट की रिपोर्ट 4 घंटे में आ जाती है. So once you have this test, and if it is found to be raised, that is called as a disease which came to know because you got the test done. There was no symptoms. And suppose you were not able to do the test and the disease got neglected. The commonest symptoms would be mild burning in passing urine. There can be urgency in passing urine. You can have difficulty like a benign prostate कि आपको दिक्कत होती है यूरिन पास करने में, दर्द होता है, जलन होती है, खून आने लगता है, आपको सीमन में खून आने लगता है. और सेकंड वुड बी समथिंग लाइक आप पता ही नहीं लगा पाए, आपको अंदाजा नहीं लगा और बीमारी स्प्रेड हो गई. दिस इज कॉल्ड मेटास्टेटिक कैंसर प्रोस्टेट, जो फैल चुका है. उसमें पेशेंट फीवर करके आता है, सीवियर बैक पेन करके आता है, वेट लॉस करके आता है, बोनी पेन्स, एपेटाइट लॉस. पर ये बात की बात है, ये कॉमन प्रेजेंटेशन है कैंसर प्रोस्टेट के. एक चीज पता की है कि 50 साल की उम्र में आपको जरूर जाके अपना एक बारी चेक कराना चाहिए, राइट? 100%. Suppose no, same. My father retired as a wing commander, so we share a common platform here. Yeah. So being a Fauji made him very aware to go to hospital for these tests and examination. Being a urologist, I can examine my dad. So my father suffers from cancer prostate. He's still there. He's still alive. That's only because we could find the disease at a very early stage. So अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री स्ट्रॉन्ग है कैंसर प्रोस्टेट की, तो आपके लिए 50 साल मापदंड नहीं है, आपके लिए 45 साल मापदंड है. So the moment you touch 45, you need to go to a urologist, have yourself examined and do a basic blood test, the report that comes in 4 hours. So that you may catch a disease very, very early before it presents itself. That's very important. Good to know, sir. The last question for you right now is, बिकॉज आपने बोला है कि 45 पे अगर आपकी फैमिली में है तो करवा लेना चाहिए, नहीं तो 50 पे तो करा लेना चाहिए. व्हाट लाइफस्टाइल चेंजेस कैन बी इम्प्लीमेंटेड एज अ प्रिवेंशन मेजर? ऐसा कुछ है? So unfortunately, there is no statistics to say कि आप कैंसर्स या इन बीमारियों को मेलिग्नेंस से आप रोक सकते हो. अब गणित लिखा है आपके जीन में है तो आप उसको रोक नहीं पाओगे. बट स्टिल इवन आफ्टर दैट, इफ यू लीव ए वेरी गुड हेल्दी लाइफस्टाइल, आप अच्छा पीना खाते हो, सब कुछ खाते हो, दाल सब्जी अच्छे से खाते हो, फ्रूट्स खाते हो, वेजिटेबल डाइट है. सेकंड, स्मोकिंग डायरेक्ट कोरिलेशन है बहुत सारे यूरोलॉजिकल कैंसर्स में. प्रोस्टेट में इतना डायरेक्ट कोरिलेशन नहीं है, बट ब्लैडर कैंसर्स, किडनी कैंसर में डायरेक्ट कोरिलेशन है स्मोकिंग का. ओबेसिटी, नो, ओबेसिटी इज कमिंग एज ए इंडिपेंडेंट फैक्टर फॉर ए कैंसर प्रोस्टेट. एंड सेकंड वुड बी द हाईएस्ट वुड बी जेनेटिक्स. अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री स्ट्रांग है, जीन स्ट्रांग है कैंसर प्रोस्टेट की, प्लीज 45 साल में जाके एक यूरोलॉजिकल कंसल्टेशन जरूर करा लीजिए. एंड हेल्दी लाइफस्टाइल, स्विमिंग कीजिए, वॉकिंग कीजिए, घर से बाहर निकलिए, घंटा भर अपने आप को दीजिए, अच्छा खाइए पीजिए, वजन कम रखिए और एग्जामिनेशन डॉक्टर से मिलते रहिए. थैंक यू सर, वेरी इंफॉर्मेटिव आंसर्स. काफी कुछ पता लग रहा है एंड आई एम गोइंग टू डेफिनेटली हैव लॉट्स ऑफ कन्वर्सेशंस विद माय पेरेंट्स. नेक्स्ट set of questions I have for Dr. Arora from Max. Sir. Yes. Yeah. देखिए, जो लास्ट रिजॉर्ट टू कंट्रोल नी एंड जॉइंट पेन वो होता है सर्जरी, ऐसा कहा जाता है, बट यू कैन करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग. इन आवर नेक्स्ट सेक्शन आई वुड लाइक टू डिस्कस ऑल अबाउट जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरीज. तो पहला सवाल ये है डॉक्टर अरोरा कि जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरीज in the city have recorded a major increase in patients with a condition known as avascular necrosis, AVN, Oh, yes. where the blood supply to the hip joint is hindered and the bone starts eroding. Can you please tell us more about this condition?
So Ranvijay, I think it will be appropriate कि मैं आपको फिर मॉडल पे समझा दूं. Three dimensional आपको visualization हो जाएगा, right? There are small without going to the medical college, I'm getting that education. Right. So I'm showing you a hip joint. हमारा जो कूल्हे का जोड़ होता है, that is ball and socket joint. उसमें एक ball है और एक socket है. There's the ball, right, and there's the socket in which the hip moves, right? Okay. जो बीमारी आप बोल रहे हैं वो ball को involve करती है. Okay. और ये ball जिसको बोलते हैं femoral head, इस ball की blood supply बंद हो जाती है, खून का दौरा बंद हो जाता है. उसको बोलते हैं avascular necrosis. Vascular means blood supply. Yes. A means it is not there. So avascular necrosis means death of tissue. So because of lack of blood supply, खून का दौरा बंद होने से ball का कुछ part dead हो गया. Now nature has made this ball as a perfect sphere. जैसे आपकी ball bearing में spheres होते हैं, गोली होती है, वो move करनी चाहिए. ऐसे ball and socket में ये ball move करनी चाहिए without any friction. कोई घर्षण नहीं होना चाहिए, इस पे कोई लकीर नहीं होना चाहिए. अब क्या हुआ? बॉल की ब्लड सप्लाई बंद हो गई, बॉल का कुछ पार्ट डेड हो गया, तो बॉल गोल नहीं रही, थोड़ी फ्लैटनिंग हो जाएगी, इसकी शेप बदल जाएगी. जैसे शेप बदलेगी, इसका पार्ट डेड है, नेचुरली इसमें फ्रिक्शन आ जाएगा. इसके ऊपर एक कार्टिलेज है, वही चिकनाई वाली बात जो मैंने घुटने में समझाई. इसके ऊपर चिकनाई लगी हुई, इसको कार्टिलेज बोलते हैं. अंदर की पार्ट डेड हो गया तो ऊपर का भी पार्ट डेड हो जाएगा. सो द बॉल बिकम्स फ्लैट, मिस शेप, इसकी शेप बिगड़ जाती है और हिप पेनफुल हो जाता है. अब आपकी गाड़ी का टायर अगर गोल नहीं है और उसकी गोलाई की जगह कुछ और आप शेप कर दें, it just can't move. Wobbling. Same is here. Yeah, you're right. Same is here. Ball नहीं रही. It is not spherical anymore. It has to be perfect sphere. तो पेनफुल हो जाता है. हिप चलने में क्या होगा? दर्द हो जाएगा, लिमिटेशन ऑफ मूवमेंट हो जाएगी, चलने में लंगड़ाहट आ जाएगी, रात को दर्द करेगा, बैठ के उठने में दिक्कत होगी. You need support to walk gradually, ultimately. और अल्टीमेटली जब बॉल पूरी खत्म हो जाएगी, जॉइंट खत्म हो जाएगा, यू विल नीड अ नी जॉइंट. तो आपको एक नई आर्टिफिशियल बॉल लगानी पड़ेगी. एंड आई कैन अगेन शो यू मॉडल हाउ इट लुक्स लाइक, राइट? सो ऑन अ मॉडल इट इज समथिंग लाइक दिस. यू पुट अ न्यू बॉल. Oh, nice. Right? So you have a ball and a socket, and again it is a perfect sphere. It will move. What metal is this? It is ceramic. Here it is ceramic. Okay. यहाँ पे कोबाल्ट क्रोमियम मॉलिब्डेनम होता है या टाइटेनियम होता है. यहाँ पे ceramic है, high density. It's a combination of various metals, right? Because knee replacement में titanium use कर रहे हैं अभी. Knee replacement में टाइटेनियम था, अब चेंज हो गया. अब क्या? Yes. See, titanium is slightly rough. Nowadays, knees are highly polished. So they are cobalt, chromium, molybdenum, highly polished knees, or gold-plated, the so-called gold-plated knees. There are various types of knees available nowadays. So there is, इसमें भी ऐसा fashion है. no, not fashion. It is improvement in metallurgy, engineering, implants. Wow. To improve life of implants. Nowadays, we safely say, okay, fine. Based on statistics, more than 95% of joints are going to last more than 20 years, maybe 25 years, maybe 30 years. Now we have a record of 30 years. I'll show you. I have some slides to show you. So coming back, आपने मुझसे क्वेश्चन पूछा कि ये बॉल एवियन avascular necrosis में बॉल खराब हो गई, हमने नई बॉल दे दी. That is hip replacement. Perfect. So this is the treatment, right? So इसी अब ये क्यों हुआ? रिसेंट पास्ट में अब बॉल की जो ब्लड सप्लाई है उसके बंद होने के बहुत सारे रीजन है, राइट? उनमें से एक इंपॉर्टेंट रीजन है जो रहा है रिसेंट पास्ट में, कोविड. हाँ, ये मेरा कोविड में टेंडेंसी होती है कि खून की नसें बंद हो जाती हैं. प्लस अगर उसमें स्टीरॉइड दिए गए विच वर लाइफ सेविंग, स्टीरॉइड्स फॉर लाइफ सेविंग, लाखों लोगों की जान स्टीरॉइड से बची है. उनमें से बहुत कम को ये संभावना है कि उनकी बॉल की ब्लड सप्लाई बंद हो जाए बिकॉज ऑफ स्टीरॉइड्स, and they'll end up in the so-called avascular necrosis. So nowadays in my busy OPD, I get at least 2 or 3 patients every day who have had COVID, were given steroids. They have avascular necrosis and I operate them. That was my next question actually. That is the extensive usage of steroids during COVID. Does it have a long-term implication on joint? It might have. Answer is it might have, but the only thing is, see,
only thing which proved to be directly beneficial was steroids in life-saving. Nothing else. Vaccine and other treatment are still not proved conclusively. To be alive with a little bit of a bad joint and then have you to help us with the joint is better than not being alive, na? That's right. Perfect. Absolutely perfect answer. Yeah. Absolutely perfect. ठीक है, वो joint pain तो आप ठीक कर ही दोगे, जिंदा रहना जरूरी है. Yes, that's right. So, sir, abhi, because you've also told us that, there has been advancement in knee joint and hip joint replacement surgery. Massive. Massive. At what age and weight do you generally suggest patients to go for total knee replacement surgery? So, Ranvijay, let me first show you the advancements. Let me take you through the journey of advancements by some slides, right? Awesome. Let us enjoy some slides and see how it has advanced. Give me a minute to share my screen, huh? Just give me a minute. Is my screen visible to you? Yes, yes. Visible, right? Absolutely. So I bring greetings from my institutes. Just in this video. So, what I showed you in last slide, this slide, a lady who has undergone knee replacement Oh, wow. a few months back, and she was brought to me in a wheelchair. Now she's dancing because it is her son's marriage. Oh, And see how gracefully she's dancing. Right? very nice. Right? Right, let's go on a few slides. See the gentleman running? He's 74 years of age. Come on. And again, from an army background, Love he you. runs and shows me, comes to my OPD, and you can see some scar on his knees. Can you see that? I can see that. Right. So he has undergone knee replacement. And he's showing me running after knee replacement. So my aim is to show you where are we in knee and hip replacement in this year, 2022. I showed you two examples of knee replacement where we have seen the function. So because of these kind of our surgeries, I got this Guinness World Records 2018. Now, first of all is prevention of infection, right? It has come drastically down. Joint replacement, we are very worried about infection. The surgical attire has changed, right? These are surgical attire. We don't use cap, mask, etc. Gone are those days. These are body exhaust suites with computer navigation. This is 20 days after replacement. Sees walk, right? Another patient, 20 days. What I'm trying to show you, the function we get nowadays in joint replacement. Gone are those days where patient was bed bound for a few weeks or few months. This is a very bulky lady and just cut of a finger, Wow. the size of a finger, see? And she's the lady, 6 months down the line. No matter how overweight the patient is. Gone are those days when patient used to be in bed for months together. So these are another lady. This is just day 4 of surgery. Walking without support. Without support. And this lady climbed 650 stairs to reach some temple. 2 weeks after surgery. 2 weeks after surgery. Now, how do we do it? We have been doing these knees for a decade by computer navigation, right? So computer navigation, these are small gadgetries we use. These are our setup, and we use camera and monitor, and we make 3D models of the knee, of the patient, and control even half a degree. Your bare eye, आपकी आंख आधा डिग्री नहीं देख सकती है. Am I audible? Yes, sir. Absolutely. Right. Computer देख सकता है. So we can play around. We can give you a perfect joint. These are the developments in last 1 or 2 decades, right? We keep on getting these patients, very difficult patients, highly obese, but you see zero error. Can you read it? दिखता आपको monitor पे? बिल्कुल. This is zero error. Zero error. So we get these kind of deformities, we correct them. And we get perfect alignment.
case after case, case after case, case after case. I'll keep on showing you. Just a glimpse of what we do in knee replacement nowadays, what have been the developments. So computer navigation has been a big boon. And then over computer navigation, now it is robotic. We use robotics in knee replacement. Wow. जो development हुआ है उसमें robotics भी आ गया. And we keep on having these meetings and conferences. Robotic setup. How does it work? We get some basic information, do our calculation. We have these kind of implants. जहाँ आप जमीन पे चौकड़ी मार के बैठ सकते हैं, कुछ लोग नमाज पढ़ना चाहते हैं, वो लोग कर सकते हैं. बुजुर्ग आदमी, सीनियर सिटीजन्स के लिए है ये. अगर 80 साल से ऊपर है, they all enjoy. Suppose you need to revise, दोबारा करना पड़ जाए किसी कारण से 25 साल बाद, 30 साल बाद खत्म हो गया, घिस गया, नया बनाना है, बना सकते हैं. We have various implants, right? So बहुत सारा डेवलपमेंट हो गया इम्प्लांट्स का. बोथ हिप रिप्लेसमेंट, आपने मुझसे पूछा एवेस्कुलर नेक्रोसिस, दोनों बॉल लगाई हुई है. ये दोनों आर्टिफिशियल बॉल्स लगी हुई हिप में. ये दोनों आर्टिफिशियल बॉल लगी हुई हिप के अंदर. और कुछ लोग मुझसे पूछते हैं कि साहब कूला कितने दिन चलेगा. जस्ट पे अटेंशन, ये 2015 का एक्सरे दिखा रहा हूं मैं आपको, 2015, राइट. ये मेरा पेशेंट 2015 में मेरे पास दिखाने आया था और मैंने ऑपरेशन 1995, इस बात को 25 साल से ऊपर हो गए. ये हिप लगाया हुआ उसको. लिसन व्हाट ही सेज. मेरा नाम प्रेमचंद है और मैं 20 साल पहले न्यूरोलॉजी से हिप जॉइंट के रिप्लेस कराए थे दोनों जॉइंट. अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ और काम पे जाता हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम अब इसको 27 साल 28 साल हो गए बदले हुए कूला. इफ यू सी लिटरेचर, 96% सर्वाइवल एट 25 ईयर. 25 साल बाद 96% ठीक रहेगा. Revision, elbow replacement, shoulder replacement, all these. And I started my journey in 1988. मुझे 32 साल हो गया इस काम को. Thank you very much. Wow, sir. So I'm stop sharing now. So this is where we have gone now in knee and hip replacement. We have patients who can go to sports and enjoy their life. So I just want to tell you, my grandfather got both his knees replaced 8-9 years ago when he was 81. And my chacha, who retired as a lieutenant general also, after he retired, he got his knee replacement. Unko bhi saal hua hai. And it's a better life also. You know, it's a better life, more confident life, less pain, zero pain almost. But because I have knee problems with my meniscus and my ACL, every time I see any kind of procedure जब हो रहा होता है ना, कोई नी के घुटने के बल गिरता हुआ भी दिखता है मुझे स्पोर्ट्स में, मेरे को दर्द हो जाता है. पता नहीं कैसे मेरे को दर्द हो जाता है. So it is called a sympathetic pain. हाँ, I think because I know how painful it is, and I think in the future, I think मेरे को भी जरूरत पड़ेगी कुछ ना कुछ. But फिलहाल मेरे और भाई जो लोग हमें देख रहे हैं उनके कुछ सवाल है. इतनी पर आपने इन डेप्थ हमें ये पूरा वीडियो और ये स्लाइड्स दिखाई. मुझे लगता है कि सवाल सब हो गए होंगे. Shrikant from Hyderabad is saying that he had a specific question. He wants to know how to control arthritis pain even after 2 years of surgery. 2 years of surgery. How to control arthritis pain even after 2 years of surgery. Surgery. इन्होंने clarify नहीं किया. See, नहीं, we do not know the age. What surgery? Because अगर हम rheumatoid arthritis की बात कर रहे हैं, medicines are available. Osteo की बात कर रहे हैं, we don't expect pain after surgery. So we need to be more specific. क्या age है इनकी? अगर senior citizen है, surgery कौन सी knee replacement हुई है, और अगर फिर भी दर्द है, they need to visit the doctor because he will find out the cause. ठीक है, तो मैं इनको बोल देता हूँ श्रीकांत जी को कि श्रीकांत जी अगर आप देख रहे हो तो एक बारी दोबारा थोड़े से डिटेल के साथ सवाल पूछिएगा और अपने डॉक्टर के पास जरूर जाइएगा. और अगर आपके डॉक्टर रोना है तो फिर कोई स्ट्रेस ही नहीं है. तो वहां पे भी मैंने देखा कि आपके जितने भी पेशेंट्स हैं वो बहुत, एक तो आपका हाथ ही नहीं छोड़ना चाहते थे. वो इसीलिए नहीं था क्योंकि उनको अपने नी पे भरोसा नहीं था, वो आपका हाथ छोड़ना नहीं चाहते, मुझे ऐसा लग रहा था. नहीं, हम बोलते हैं हम सुख दुख में साथ हैं आपके. We are there. You know, the kind of things that both of you have spoken about, that brings me to one kind of question. The equipment आपने मेरे को दिखाया कि ये बॉल है, ये है, रोबोटिक्स है, इतना मतलब this looks expensive.
you know, while modern treatments are making the cost of hospitalization expensive, we can all actually safeguard ourselves from paying for these treatments from our own savings or by opting for health insurance plan to cover for these costs. क्योंकि जिन जिन लोगों का आपने मेरे को एक्चुअली वीडियोस दिखाए हैं ना सर, मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर वो what if they couldn't afford it, ये लाइफ जो है, these are not cheap. These many people I'm seeing, even your suits that I'm seeing, our suits अच्छे हो गए लेकिन कॉस्ट तो बढ़ गई. yes, रोबोटिक्स आ गए, कॉस्ट बढ़ गई. मेटलर्जी हो गई लेकिन कॉस्ट बढ़ गई ना. oh yes, तो इन सब के लिए अभी डॉक्टर मिश्रा, हमारे पास अब आपकी जो एक्सपर्टीज है उसकी बहुत जरूरत है, बिकॉज ऑफ कोर्स एवरीबॉडी वांट्स टू लिव पेन फ्री एंड अ बेटर लाइफ, एंड ऑल दीज प्रोसीजर्स देयर आर super doctors like Dr. Nader and Dr. Arora, but can you give us an indication, Dr. Mishra, what is the cost of treatment nowadays for a knee joint replacement surgery? And are there any waiting period before an insurance company pays the claims for such treatments? Yes, Anuja, and again a very, very pertinent question. See, in our country, आप अगर देखेंगे तो today people from abroad come here to get the best quality healthcare that is available. The quality of care in India is as good as possibly the most developed nations, at least in some hospitals, in some locations, and so on. But of course, it costs. While it may cost much lower than what it costs outside of India in western part of the world, but it's for an Indian population, it still costs a sizable. A knee replacement today could cost anything between 2.5 lakh rupees to 5 lakh rupees. We also have convenience items coming in. What kind of a room somebody is going into? Is somebody going to a quaternary care hospital or maybe a tertiary care or a little below tertiary care? So a lot of factors influence this cost. Of course, the choice of implants, equipments, and so many things are there. Now, the part of stress that Dr. Nader said and Dr. Arora said that they help reduce and remove still leaves one stress. And healthcare has two facets in any country, in any context. One is the delivery, which, as we heard, Dr. Arora, Dr. Nader, as eminent healthcare professionals, clinicians, surgeons, help deliver that healthcare. The other part is healthcare financing, and they go hand in hand, right? And it's very important to be insured. It's very important to be insured because it gives you choices. आप सोचिए ना, if I need to have an insurance for my parents or not have an insurance for my parents, मेरा जो choice होगा मैं किन डॉक्टर के पास जाऊँ, कैसे हॉस्पिटल, क्या इम्प्लांट चूज करूँ, it gives me a lot of freedom to do that. It empowers me to do that, right? And without that, you'll be surprised. Research shows that almost 40+%, possibly up to 50% of people in India either sell assets or borrow money to meet their medical expenses, right? And insurance is a tool that also saves that respect, because suddenly किसी को 5 लाख रुपए 10 लाख रुपए चाहिए, available नहीं हो सकता. Even if you try to borrow, you may not. And why borrow if your insurer can come in? As you rightly said, there are certain treatments जिसमें waiting period रहता है. And उसी पे हम लोग हमेशा ये बोलते हैं कि please take insurance as early as you can. When you are younger, your premium is low. You can pay this premium so that by the time you really need it, right, for certain planned treatments, certain treatments that I can live with for a certain time without necessarily having to undergo a procedure, वो waiting period over हो जाएंगे. जैसे डॉक्टर नादर ने बताया, फॉर बिनाइन प्रोस्टैटिक हाइपरप्लेसिया और बीपीएच जिसको बोलते हैं, उसके लिए करीब 2 साल का वेटिंग पीरियड रहता है डिफरेंट इंश्योरेंस प्लान में, ज्यादातर सारे इंश्योरेंस प्लान में. वैसे ही नी रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट के लिए 2 साल का वेटिंग पीरियड रहता है. लेकिन अगर मैलिग्नेंसी है प्रोस्टेट में, सेम प्रोस्टेट ऑर्गन, बट अगर इफ इट इज मैलिग्नेंट वन, तो उसमें कोई वेटिंग पीरियड अप्लाई नहीं होती. Right? Only when it is BPH, because see, there are certain conditions which are benign, which I can live with for a certain duration. And insurance में इसको कहते हैं adverse selection. अगर मुझे जरूरत है और मैं insurance लूं और claim करूं, so it's also a pooling business where 100 people pay to fund for the treatment of few, right? And insurance company like us are custodians of public money.
You're right. So you need to collect from many people and judiciously pay those who need it at a certain point in time. So one, because knee replacement, hip replacement, benign prostatic hyperplasia के ट्रीटमेंट जैसे TUR हो गया, TURP हो गया, TUNA हो गया, या फिर जो मॉडर्न हॉल्मियम लेजर्स वगैरह हैं, उन सब के लिए 2 साल के वेटिंग पीरियड है, तो जल्दी लेंगे पॉलिसी. आयरनी ऑल्सो आई विल हाईलाइट इज कि जब एक 40 साल का कोई नौजवान है और किसी अगर 65 साल के एल्डरली बुजुर्ग को देख रहे हैं, जरूरत सबसे ज्यादा बुजुर्ग को है. फ्रीक्वेंसी ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन इज मच हायर एज वी एज. After 60, with every 5-year advancement in age, our frequency of hospitalization statistically goes up substantially higher. So 40 से 45 होने में इतना इंक्रीज नहीं होता हॉस्पिटलाइजेशन जितना 60 से 65 या 65 से 70 होने में हो जाती है. So the premium also increases because of that. It is better to buy plans early and buy adequate. इंडिया में दोनों प्रॉब्लम है रणवीर. एक तो हमारे कंट्री में हेल्थ इंश्योरेंस की पेनिट्रेशन कम है, जागरूकता अवेयरनेस कम है, सो एज ए परसेंटेज लेस नंबर. दूसरी प्रॉब्लम ये भी है, अंडर इंश्योरेंस भी है. जिन्होंने ले रखी है पॉलिसी वो 3 लाख 5 लाख की पॉलिसी है. The frequently taken sum insureds in India are under 10 lakhs, which may be very very inadequate. आप देखिए किसी बड़े शहरों में, if you want the gold standard treatment, it will not come cheap. You're right. वैसे भी बोलते हैं ना, जान है तो जहान है. Insurance comes handy and with great clinicians, some of them being present here, all somebody needs is adequate sum insured coverage and good health insurance plan. Dr. Mishra, I've gotten a few points. एक तो इंश्योरेंस, जैसे आपने बोला अभी 30-40 का जो हो रहा है, बंदा जितनी जल्दी ले एक प्लान बनाए लाइफ का वो बेटर है. और ढंग की इंश्योरेंस लेना, बिकॉज वो 3 से 5 वाली जो है उसमें शायद सब चीजें कवर ना हो. तो ये जो एजुकेशन और ये अवेयरनेस फैलाना, जो पेनिट्रेशन आपने बोला है, उसके लिए आपको चाहिए एक बहुत ही तगड़ा ब्रांड एम्बेसडर जो यूथ को और उस एज ब्रैकेट को ढंग से पकड़ता हो. तो इसके बारे में बात करेंगे अगले सेशन में पहले, बिकॉज आपके सामने ही है ये हीरा, आप परखिए बस इसको. of this. No, but I truly think that this is the right age, because I've started thinking and I have that kind of influence on my this generation, because इससे पहले तक तो अब एडवेंचर पे कि कब मैं कूदूं, कब मैं फानूं. अब है कि भाई जब लैंड करूंगा तो दर्द भी तो होगा. और उसका अगला ये है कि उसको ठीक कैसे रखना है, और हाउ टू always in your life be adventurous and all of that. So I think this is a great, this penetration idea and the awareness is very important. But बहुत सारे सवाल हैं आपके लिए, because I have another one कि ये अगर सही टाइम पे की जाए, but all of this, can it be part of something called healthy aging? Like, can we talk about all three of you, not other ways of just living well? Like, I started this with saying that by default, my father was because he was in the Indian Army, when he retired, ऐसा नहीं था कि जिस दिन रिटायर हो उसके अगले दिन से उनका रवैया बदल गया. No, he's still active, he's still meeting his friends. Now he's playing golf, 18 holes. मतलब उन्होंने सेटल ही चंडीगढ़ में हुए कि भैया 4 अलग-अलग golf course जा पाए. By the competition spirit, by whatever you call it, by camaraderie or whatever, 18 होल जब आदमी चल के आता है तो बहुत सारी एक्सरसाइज होगी आपकी. उसके ऊपर से ड्यूरिंग कोविड आई सॉ माई पेरेंट्स की, शायद मेरे छोटे भाई की शादी नहीं हुई तो इसलिए अभी भी उनमें वो जज्बा है. जैसे वो लेडी का आपने दिखाया ना वो वीडियो, तो वो ना उन्होंने डांस क्लासेस, वो एक जुम्बा डांस क्लासेस शुरू कर दी कि एक लड़का उनके बबल में रहा जो उनको एक्सरसाइज भी करा रहा था और उनको डांस भी करा रहा था. सडनली हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे आ रहे हैं उनके वीडियोस, गानों पे कोरियोग्राफ्ड. If you keep it interesting, if you keep it light, and if you keep it part of your social circle, is that a way to go, or what? Any tips from you guys? Because this is what I've noticed, and I think it's working for them. So, can I add something? Ranveer, you asked a question about insurance. Sir, आपने बोला can I add? मैं किस मुंह से बोल सकता हूँ कि नहीं? Of course. This is something regarding insurance. I'm going to add. Yes, because we keep on seeing patients day in and day out. दो aspect में सुनाता हूँ आपको insurance वाले. Though I'm not from insurance company, and I don't, I'm not here to promote any insurance company. But this thought of insurance, you see, the best gift you can give to your parents is looking after them, the way you told us. Yes. Any society is recognized by the way they take care of senior citizens, the concern for senior citizens, right? Undoubtedly, you can take care in the house, but what about going out of the house, like medical? So first of all, think of gifting your parents a good insurance policy or plan.
That shows your concern towards your parents, besides serving them. That is one. Second, I quote you one example. Recently, I have a patient in the hospital, in my ICU, a young boy of 35 years of age who had head injury. उनको सिर की चोट लग गई. माँ बाप ने 3 महीने पहले इंश्योरेंस कराया, अपना कराया 10-10 लाख का. बोला यंग आदमी को क्या जरूरत है इंश्योरेंस की, राइट? एंड his current hospital bill was 16 lakh rupees because he was on ventilator. So I think one should not ignore insurance even at a younger age. You never know what can strike you when. You're right. So that is aspect. That's my thought on insurance, right? I think we should not ignore both the age groups. Now you ask me how to keep healthy. I think it starts from thinking here how to keep healthy. First of all is awareness that you have to keep healthy. When I get patients who come to me with knee or hip problems or aging issues, the gentleman is 58 or 59. उनको हम कुछ समझाते हैं कि आपको ना ऐसे करना चाहिए. बोले साहब सब 60 के होने वाले हैं, अब क्या करना, अब तो उम्र बीत गई. That kind of philosophy people in India live with, because there is a lot of social support. Now, if you have thought process that I have to live healthy, then you will make an effort to live towards this side, being healthy. There are 100 ways of living healthy, but I think first of all is awareness. Now, you need to be mentally fit, you need to be physically fit, you need to be spiritually fit and socially fit to be a healthy person. Isn't so? A doctor can guide you how to be medically fit, how to exercise daily. There are so many things, so many educational materials available. But only thing, if you are aware, you will start acting on them. First of all, keep yourself mobile. Very, very important. These COVID times in the last 3 years have brought such a change in the society. We are getting a number of patients who are somehow immobile in the house, and they have precipitated their knee problems to an extent they require surgery now. First of all, keep yourself mobile. मुझे लगता है be active, indulge in fun activities. अपने बिल्डिंग के नीचे बैडमिंटन खेलो, सैर के लिए जाओ, बातें करो, थोड़ा हेल्थ और न्यूट्रिशन की तरफ भी थोड़ा ध्यान दो. डाइटरी क्या रिक्वायरमेंट्स होते हैं. एंड डॉक्टर नादर, I mean, your father was also from a defense background. What do you think is working for or should happen in healthy aging? Because I think Dr. Arora has covered most of it. Most important again is to educate yourself. Tell yourself something which is not normal. Suppose you say कि I leak urine, or a lady or a man, he says I leak urine, and I talk to my friends, and everybody has a leakage issue, and we say it is normal. I had small blood in my urine, and I talked to my friend. He said थोड़ा blood निकल गया क्योंकि गर्मी हो गई थी. वो normal है. वो normal नहीं है. Talk to your doctor. Leakage of urine, having blood in the urine, these are small symptoms that can be because of you may be harboring something which is very, very important. Just kindly go out, talk to your doctor. We are available. Google it. अपने फ्रेंड से बात करो, बच्चों से बात करो, बोलो ये मेरे को दिक्कत है यार, दिखा दो मेरे को जाके. So education is very, very important. Coming out, discussing these with your doctor is very, very important. These are not normal. They are treatable. They have to be investigated. और healthy aging के लिए activities बोल दिया हमने, knowledge बोल दिया, अपने आप को go out and seek information बोल दिया. कुछ चीजें जो खाने पीने की चीजें, कुछ dietary, कुछ some things people should avoid ना for healthy aging. आप बोलते हो fried खाना, sugar वगैरह, or do you say कि नहीं उस पे कुछ? देख, I think अभी तो healthy eating में मेरे ख्याल से younger generation has got more to learn. That availability of things. अगर रात में मुझे 2 बजे भी मूंग की दाल के हलवे का मन कर रहा है, तो मैं कहीं भी ऑर्डर करके 15 मिनट में आ जाऊंगा. तो वो जमाना चला गया कि अब माँ को बोला चपेट पड़ेगी रात में कि तूने मांग कैसे लिया हलवा, 2 दिन बाद ही बनेगा. So the overeating and obesity, it is on the rise for a younger generation, and then they'll have a price to pay in terms of stone, in terms of prostatic cancer, in terms of osteoarthritis. Dr. Arora said. This is a trend that has happened in the West, and they are so obese because, especially in the USA, because the younger generation just had food all the time. There were no rules and regulations. अभी भी ये हो गया, आपको जब भूख लग रही है आप कुछ भी खा सकते हो, पूरे दिन कुछ भी मंगवा सकते हो, कुछ भी मंगवा सकते हो जिसकी भी क्रेविंग है. So you're right. I think younger generation में फिर थोड़ा ध्यान देते हैं. नहीं, बिल्कुल रणवीर जी. अगर आप last time you went to a Indian swimming pool, go there and observe. The people at your generation, my and probably elderly, they sometimes feel more fitter than
जो अभी लोअर केजी का बच्चा है या फर्स्ट क्लास में, सेकंड क्लास में, थर्ड क्लास में, obesity is rising the other way in India. We are paying the price of strong availability of things. But imagine करिए मैं एक इंडियन स्विमिंग पूल में जा रहा हूँ और ऑब्जर्व कर रहा हूँ, मैं कैसा लगूंगा वहां पर? Okay, sir. I have some. This is great. I have some question and answer session from people, and let's जिसका भी मन करे we can just answer this. But there is a guy called Rahul Gautam from Hyderabad. He wants to know कि are there any side effects of taking several body scans like CT and MRI? और ये तो मतलब एक है कि यार ज़रा एक्सरे मत कराओ, ये मत कराओ, तो इसका एक्चुअल आंसर अगर मिल जाए आज आप So Ranvijay, there is no harm of MRI at all. It is done by sound waves. Yes. MRI तो एक प्रेग्नेंट लेडी का हो सकता है, MRI एक फीटर पेट में बच्चा उसका भी हो सकता है. MRI super duper safe. CT scan? CT scan involves small dose of radiation. You cannot get done frequently. आप frequently CT नहीं करा सकते. ठीक है. और ये मेरा सवाल X-rays because I want people to. X-ray में there is very very small dose, 1,000 fraction of radiation. बहुत कम होता है, पर you can't get these X-ray and CT scan repeatedly. But MRI is no issue at all. MRI, ultrasound, no issue. कुछ एज का हमें पता लग गया कि अगर फैमिली में हिस्ट्री है तो 45 पे करा लो या 50 पे करा लो, स्पेशली प्रोस्टेट. बट संजीव सानी फ्रॉम दिल्ली वांट्स टू नो सर कि हाउ ऑफन टू गेट टेस्ट डन इन ऑर्डर टू आइडेंटिफाई इफ माय पेरेंट्स हैव एनी इशू और yearly safest yearly. Okay, great. Saraswati Pandey from Itawa wants to know what diet should be followed by the person who's having pancreatitis problem. It's mainly gastroenteritis, gastroenterological question. Pancreatitis. Pancreas में swelling. I think that will be advised by their gastroenterologist. But going by common sense and ambiguous knowledge, one has to avoid fatty food, fried food, high calorie food, because your pancreas is not working well. You're very prone for diabetes. It's so very light food you require. You can't take all these kind of foods, high sugary content, processed foods. So pancreatitis is quite a severe disease. It's not a simple small disease. They need to go to a doctor for everything. Shishir Jain from Noida. How can I get insurance for my old parents above 75 plus or 80 plus? Sir? Sure. I think we have and multiple health insurance plans for senior. One I mentioned, Anuja, is Senior First Plan. That can be taken by people who are, let's say, above 58, 60 years and above 60 years of age. We have another plan also which is available for. So there are multiple plans available. It is important, however, not just to get insurance for your parents or elderlies. Get the right plan for them. And that would require assessment about age kya hai, kaun se city mein hai, right? Are the plans required only for father or both parents? Requirements exactly would also depend upon कि अभी कोई chronic conditions हैं या नहीं है. So these factors will go into deciding which is the right plan for them. And as I said, Senior First जो plan बना है, this is well researched plan, specifically taking care of all these. तो हमने देखा है कि elderlies में, elderly parents, senior citizens में कोई ना कोई chronic condition होते हैं. For example, diabetes, hypertension, etc. is fairly common in that age group. So this plan accepts people with diabetes, hypertension. Usually health insurance plan में ना कोई chronic condition हो तो loading या extra premium देना पड़ता है, जो कि Senior First में देना नहीं पड़ता है. You're right. सर आगे कुछ सवाल हमारे जो है काफी इंटरकनेक्टेड हैं टू दीज थिंग्स ओनली एंड काफी चीजें आपने एक्चुअली पहले भी कवर करी थी. इट्स अबाउट प्राइस एंड बट आई जस्ट मैं इनके सवाल पढ़ लेता हूं बिकॉज इन्होंने भेजे हैं. नीमा फ्रॉम बैंगलोर सेज दैट सीनियर सिटीजन इन इंडिया हैव नॉट दैट मच ऑफ फाइनेंशियल सपोर्ट इन कंपैरिजन टू द डेवलप्ड कंट्रीज. इसके बारे में हमने बात की है. देन व्हाई इज देयर अ कोपे फॉर देम? She's going to be a senior citizen next year, and now she's saying that she's nearly paying 60K of premium, 60,000 रुपए अपनी पॉलिसी के लिए, which started in 2012-2013 with only 15,000 at that time. Yeah. How is that justified? And similar to this question, हमारे पास और दो सवाल है. एक पहला ये from Subin Thomas from Ahmedabad. He wants to know कि health insurance
is it advisable at 60s and how much? And Manoj Gupta is saying ki my in-laws are 65 plus, they have issues of sugar and BP, so can you suggest what kind of medical insurance Dr. Mishra can tell? Now the thing is, Dr. Mishra, 2-3 साल मैंने एक साथ पूछा, but I know that you've covered a lot of it, saying that जो इक्विपमेंट है 60 to 65 में जब फ्रीक्वेंसी बढ़ गई, 65 to 70 में फ्रीक्वेंसी बढ़ गई जो 40-45 में नहीं थी, तो ऑब्वियसली आपका प्रीमियम बढ़ जाएगा. ये आपने पहले जवाब दिया था. लेकिन अभी आप ये और किसी ने बोला कि 60-65 में मेरे इनलॉज के लिए क्या मैं प्रीमियम लूं और कितनी लूं, उनको शुगर ये वगैरह है, तो ये एक सारा मैंने आपको एक बंडल में दे दिया है, आप इसका एक साथ ही जवाब दे दीजिए. बिल्कुल बिल्कुल. तो पहले तो जितनी उम्र बढ़ेगी इंश्योरेंस की, एक्चुअली हेल्थ केयर की उतनी ज्यादा जरूरत होगी. ये अगर हम मान रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि हेल्थ इंश्योरेंस की भी जरूरत बढ़ेगी. अनफॉर्चुनेटली होता क्या है, अदर देन लेट्स से फ्यू प्रोफेशंस, व्हेन वी एज, एक ऐसा टाइम आता है लाइफ में जहां पे इनकम सडनली ड्रॉप हो जाता है. Right. और जरूरतें इंश्योरेंस के सबसे ज्यादा मैक्सिमम हो जाती हैं. There's a point in our lives when we need insurance the most, but we lose the income substantially from earlier. तो उसीलिए पहले ले लेना जरूरी है. But nevertheless, अगर उस उम्र में भी ले, why? Let me combine this. कि प्रीमियम क्यों बढ़ता है? एक तो जैसे दाल, चावल, तेल, आटे की कीमत बढ़ती है, उसका कारण होता है इन्फ्लेशन, वैसे ही होता है मेडिकल इन्फ्लेशन. इन एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड मेडिकल जो इन्फ्लेशन होता है वो जनरल इन्फ्लेशन से थोड़ा सा ज्यादा ही होता है. And because of this medical inflation, which is caused by variety of factors like सारे cost बढ़ रहे हैं, equipments, reagents, real estate cost बढ़ रहा है, तो hospital cost increases. दूसरा होता है newer treatments, newer equipments, newer implants are being made available, better quality things coming in. Robotics cost बढ़ता है, right? And medical inflation works that way every year. So अगर मैं 15 साल पहले अगर एक्स अमाउंट प्रीमियम दे रहा था, उसके दो कारण थे. एक तो मेरी उम्र कम थी तब, अब प्रीमियम बढ़ गया है बिकॉज अगेन उसमें एक कारण ये है कि मेरी उम्र बढ़ गई है. दूसरा ये भी कारण है कि मैं 15 साल का इन्फ्लेशन भी फैक्टर करना होगा, राइट? व्हाट वाज द कॉस्ट ऑफ अ मोबाइल कॉल 10-20 years बैक? वो एक ही चीज है जो घट गया है शायद, बट रेस्ट एवरीथिंग फ्रॉम योर डे टू डे कंजम्पशन थिंग्स व्हिच हैज इंक्रीज्ड ओवर ईयर्स. सो वी शुड अंडरस्टैंड दैट. सीनियर फर्स्ट जैसे प्रोग्राम जैसे प्लान है उसमें स्टैंडर्ड है 50% कोपे. 50% कोपे इसलिए है बिकॉज लॉट ऑफ पीपल कम टू अस एंड से कि वी कांट अफोर्ड द हेल्थ इंश्योरेंस एज ऑफ नाउ, सो गिव अस समथिंग विद लिमिटेशंस, ताकि मैं कम से कम जीरो प्रोटेक्शन से कुछ तो प्रोटेक्शन मिले. बट सीनियर फर्स्ट में हमने ये किया है कि व्हाइल डिफॉल्ट इज 50%, वी हैव गिवन चॉइस टू रिड्यूस इट टू 40, 30, 20, 10 एंड इवन 0. सो इफ समबडी वांट्स कि 0% कोपे में भी प्लान ले तो वो सीनियर फर्स्ट में अवेलेबल है. वी हैव आल्सो इंक्लूडेड थिंग्स लाइक डे 1 से एनुअल हेल्थ चेकअप. एवरी ईयर एनुअल हेल्थ चेकअप फॉर सीनियर्स अवेलेबल इन सीनियर फर्स्ट. वन इंटरेस्टिंग थिंग इज दैट 2 claim free years में उसमें ना सम इंश्योर्ड दुगना हो जाता है. इफ यू स्टार्ट विद 10 lakhs, आफ्टर 2 claim free years वो 20 lakhs हो जाता है, बट प्रीमियम 10 लाख का ही देना पड़ता है. सो वो एक एडवांटेज होता है. आई एम एंजॉयिंग ट्वाइस दैट मच ऑफ अ कवर, राइट? सो दीज आर सम फीचर्स. So while you are choosing insurance plan, one, you must take it, irrespective parents are 65 or not. अगर diabetes hypertension है तो जरूरत ज्यादा है. And plans like senior fast जहाँ पे लोडिंग नहीं देनी पड़ती, कम वेटिंग पीरियड है प्री एग्जिस्टिंग कंडीशंस के लिए, दुगना हो जाता है सम इंश्योर्ड 2 claim free years में. रीएश्योर जैसे एक बेनिफिट है जो कि हर बार वैल्यू जो सम इंश्योर्ड होता है उसको रीइंस्टेट करता है. डे 1 से एनुअल हेल्थ चेकअप. तो इन सब this becomes a very powerful one to avail. At least what I call is seniors as the golden years. तब बच्चे settle हो गए, everything, you are stress free. Stress is something that you should avoid. दोनों eminent doctors have spoken about it. I would add one more thing कि live happy. Happiness is health. Actually, जितना stress free रहेंगे and insurance will take away that stress. मैं अपनी तरफ से बोलना चाहूंगा कि जब मेरे पेरेंट्स को मैंने देखा है कि एक्चुअली दे आर द मोस्ट वेल ऑफ राइट नाउ आफ्टर रिटायरमेंट, बिकॉज उनके खर्चे बहुत कम है. उनके बच्चे जो है दोनों पढ़ाई के खर्चे जा चुके हैं, और बाकी जो चीजें चाहिए होती है लाइफ में कि ये भी चाहिए, घर भी खरीदने, वो खरीद चुके हैं लोग, राइट? एक्चुअली दी ओनली खर्चा इज मेडिकल. तो चाहे आपकी इनकम भी नीचे हो गई हो, योर मेन प्रायोरिटी शुड बी मेडिकल यार. और उसके अलावा खर्चे ही क्या है? So 2 things I'll tell Ranuj. One is
our parents, our elders are the reason where we are today. Yeah. अपनी जिंदगी भर उन्होंने सिर्फ दिया है, अपने लिए कुछ किया नहीं, लिया नहीं. सब टाइम पे यही सोचा, बच्चे इवन ग्रैंडचिल्ड्रन तक खुश रहे. They have always given. This is for a time for them to spend on self. Take care of yourself. Your time has come, golden years, to be happy. Second thing, do not just leave it to parents. It is our duty as children also to, we can never give back what we have gotten. We should never target, but gifting health insurance to them is the least we can do to take away that stress. मैं तो उन लोग बच्चों को बोल रहा हूँ जो जिस घर में रहते हैं ना, और वो बोलते हैं ये तो मेरे डैड का घर है, अब हम भी इसमें रह रहे हैं. आपने घर लेने में कोई मतलब अपना हक समझते हैं ना, यूर ऑलमोस्ट एंटाइटल्ड है, मेरा है, हमारा दादाजी का है, हमारा है, अब हमारा हो गया, ये गाड़ी भी हमारी है, सब हमारा है, क्योंकि वो पिताजी ने बनाया या दादाजी ने बनाया. तो अगर वो उस तरीके से ले रहे हो तो इंश्योरेंस तो बड़े आराम से दे सकते हो. क्या है, बर्थडे पे दे दो, मतलब इट कैन हैपन वेरी इजीली. सो आई थिंक ये देखने का नजरिया है कि ये उनकी जिम्मेवारी नहीं है. आपने सही बोला है, मेरे पेरेंट्स की जिम्मेवारी नहीं है. अगर वो मैं उनसे मेरे को इनहेरिट करने में मजे आ रहे हैं तो यही तो करना है, थोड़ा सा ही तो है. एंड आई थिंक दैट मेक्स मोर सेंस. ऐसे देखना चाहिए बिकॉज दे आर स्टिल लुकिंग एट, नहीं हम अपने पे इतना क्यों खर्चे हैं, क्या करें. इट शुड बी द अदर वे अराउंड. एंड आई एम गोइंग टू टॉक टू माय फ्रेंड्स अबाउट इट ऑल्सो. आगे सवाल छोटे छोटे हैं, लेकिन I think the three of you have covered so much that I'm going to run through a question. If I feel like इसका आंसर हो चुका है, you guys can give a short answer or a long answer, up to you, because मैं तो जितना ज़्यादा टाइम आपके साथ स्पेंड कर रहा हूँ, मुझे लगता है कि मेरी नॉलेज बढ़ती जा रही है. Manoj Kumar from Pitampura, Delhi is saying for Dr. Nader, this is a question: how to manage for Dr. Nader, how to manage sudden urine blockage at home? See, you cannot manage sudden urine blockage at home. You have to take the person to the hospital. So we live in a country where, the medical facilities available within few kilometers. We have emergencies. We have super specialists available to you at dead of the night. If a patient comes in the night and say, being a director of urology, he said, it is my call day. Wouldn't I go and put a catheter? Yes, I would go and put a catheter. So a sudden urine blockage at any age, the person needs to go to the hospital to have a catheterization done, at least. Now you have availability of, that home care. Yes, if the home care is good, the person provider is good, he is proficient enough and technically good, yes, he can avail that facility in the house. But again, प्रोफेशनल के पास जाना जरूरी है. इसका कोई टोटका नहीं है, घरेलू कोई कुछ नहीं है. ये लोगों को मैं बताना चाहता हूँ 100%. प्लीज एक प्रोफेशनल के पास, अगर घर पे है प्रोफेशनल बहुत अच्छा, नहीं तो आप चले जाइए डॉक्टर के पास या हॉस्पिटल. सही जवाब. Sorry. Anand from Navi Mumbai wants to know, how can we help our aging parents having PED? ये जो abbreviation है ये भी हमें बता दें तो, like cabbage, by providing proper health insurance. Currently, we only have a plan providing insurance for such cases, but it has co-payment and room rent capping. Can Niva Bupa come up with a plan without co-payment and eligibility of single private room? Children like me are eager to avail such plans so that we can take care of our parents in their elder age. Sure. So रणविजय, हमारे ऑलमोस्ट सभी प्लान में ना कोई रूम का रिस्ट्रिक्शन है, ना कोई डॉक्टर फीस में रिस्ट्रिक्शन है, ना और किसी तरह का रिस्ट्रिक्शन है. So customers availing our plans can go to the room of their choice. Nice. Go to the hospital of their choice, doctor of their choice. अगर और जो बाकी लिमिटेशंस वगैरह भी जो बताए हैं, एंड दिस इज व्हाट आई एम स्ट्रेसिंग अपन, सिर्फ हेल्थ इंश्योरेंस मत लीजिए, सही हेल्थ इंश्योरेंस लीजिए, एडिक्वेट हेल्थ इंश्योरेंस लीजिए, एंड स्पेंड अ लिटिल टाइम अंडरस्टैंडिंग व्हाट आर द क्लॉजेस. बिकॉज हेल्थ इंश्योरेंस का टेस्टिंग ना एक ही टाइम पे होता है, क्लेम के टाइम पे. बाकी टाइम पे उसका वैल्यू कोई नहीं है. व्हेन द मोस्ट वल्नरेबल टाइम कम्स, दैट इज व्हेन पीपल स्टार्ट रीडिंग एंड फील शॉक्ड एंड एग्रीव्ड, जो कि पहले ही थोड़ा जानकारी लेना जरूरी है. एंड डिफरेंट प्लान्स होते हैं इसलिए क्योंकि कस्टमर के पास चॉइस रहता है. नॉट एवरीबडी कैन अफोर्ड सेम, तो किसी में कोई रेस्ट्रिक्शन होता है, बट नॉट विथ नीवा बुपा. सी रणविजय, आई कैन टेल यू बिकॉज आई एम अ ट्रांजिशन पर्सन फ्रॉम क्लिनिकल टू मैनेजमेंट. सो आई हैव सीन on the healthcare side, and now I am in the healthcare delivery nahi, but financing side, and I'll tell you that as many people
suffer because of lack of access to quality care, perhaps more suffer because they cannot afford quality care in this country. Okay. Rightly said. Sir, next सवाल. Rishabh Srivastava from Delhi. He wants to know how to identify the symptoms. जो हमने पहले बात की थी कि osteo और rheumatoid arthritis अलग-अलग हैं. इनके जो बीच का जो symptom है वो कैसे एक identify कर सकते हैं? And how to cure hollow bones? How to cure low vitamin D levels? How do you know your bones are strong? काफी. All right. So there are 4 questions in one question, right? बिल्कुल. So देखो, रूमेटॉइड और ऑस्टियो में फर्क कैसे मालूम पड़ता है? रूमेटॉइड आर्थराइटिस में यूजुअली मल्टीपल जॉइंट्स इन्वॉल्व होते हैं. ऑस्टियो आर्थराइटिस में यूजुअली नीज इन्वॉल्व होते हैं. अगर मुझे हाथ की छोटे जोड़ों में दर्द है, रिस्ट में पेन है, एल्बो में पेन है, शोल्डर में पेन है, आइदर ऑफ दीज में पेन है, घुटने में भी दर्द है, चांस है कि आपको रूमेटॉइड है. ऑस्टियो नहीं. ऑस्टियो में सिर्फ उम्र से घिसना है और घुटने में दर्द होना है. सूट सकता है. अगर मेरे जोड़ सूजे में है, मॉर्निंग स्टिफनेस है, तो चांस रूमेटॉइड के है. कैसे मालूम पड़ेगा? एक डॉक्टर मालूम कर लेगा. कुछ सिंपल ब्लड टेस्ट अवेलेबल है, उससे मालूम हो जाएगा. वेरी सिंपल, मुश्किल काम नहीं है. पर आप ऐसा नहीं कर पाओगे. यू कैन हैव एन इंक्लिनेशन कि मेरे को मल्टीपल जॉइंट है तो गठिया होने की संभावना है, विच इज रूमेटॉइड. दूसरा ने पूछा विटामिन डी. विटामिन डी डेफिशिएंसी रैम्पेंट है. क्यों रैम्पेंट है? एक छोटी सी बात आपको नेचुरल सुनाता हूं मैं. प्रभु ने, भगवान ने हमको धरती पर बना के भेजा. ये कपड़े पहनने के बनाने के लिए नहीं भेजा. प्रभु ने बनाया कि आप इनके बिना जंगल में रहिए और दिन में 8 घंटे की 6 घंटे की धूप ले लें आप, तो विटामिन डी पूरा हो जाएगा. विटामिन डी के 2 ही सोर्स हैं नेचुरल. वन इज सनलाइट, धूप. दूसरा एनी फैट इथनिंग. विटामिन डी फैट सॉल्युबल विटामिन है. घी में, तेल में, उन सारी चीजों में होता है. बटर में, मिल्क में, इन सब चीजों में होता है. या तो आपका धूप का सेवन इतना हो कि बिना कपड़े रहें, आई डोंट थिंक सो. हम कुछ 6 महीने बीच पर नहीं लेट सकते हैं. और या आप रोजाना छोले भटूरे खाते हो, खूब सारा तेल खाते हो, तो आपको विटामिन डी पूरा हो जाएगा, विच इज नॉट पॉसिबल. इधर ऑफ दिस इज नॉट पॉसिबल. कुछ लोग फैशन के लिए टी शर्ट पहनकर थोड़ी देर के लिए बैठ जाते हैं आधा घंटा कि मैं विटामिन डी पूरा कराऊं. इम्पॉसिबल. आप अपनी बॉडी का 20% एक्सपोज कर रहे हैं आधे घंटे के लिए, विटामिन डी पूरा नहीं होगा. So anybody who wears clothes, stays indoor, उसको विटामिन डी कम होने होना है. So विटामिन डी सिंपल चीज, एक बार चेक करा लें. विटामिन डी की कुछ डिफाइंड डोज है, जो एक यूजुअल रेगुलर डोज होती है, वंस ए वीक फॉर 8 वीक्स एंड वंस ए मंथ है. वो आपके डॉक्टर आपको गाइड कर देंगे. और विटामिन डी डेफिशिएंसी बहुत रैम्पेंट है. और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताना चाहता हूं, खासकर गर्ल्स में एट अ ग्रोइंग एज, between 10 and 15 or 16 years of age, you need to have heightened awareness of vitamin D deficiency, क्योंकि उसमें बच्चे की बोन स्ट्रक्चर बन रहा है. वो ठीक नहीं बनेगा अगर उस बच्ची का जब रैपिड ग्रोथ होती है तो विटामिन डी पूरा हो या कैल्शियम कम. दैट इज अबाउट विटामिन डी. इट्स क्वाइट रैम्पेंट. आप शायद पूछ रहे हैं हॉलो बोन्स. आई थिंक यू आर वांट टू टॉक अबाउट ऑस्टियोपोरोसिस. ऑस्टियोपोरोसिस आर वीक बोन्स विच यू फाइंड इन ओल्ड एज. ओल्ड एज में भी हो सकती है, 50 में भी हो सकती है, थोड़ा पहले भी हो सकती है. कैसे मालूम करें? एक बहुत सिंपल टेस्ट है, उसको बोलते हैं बोन मिनरल डेंसिटी. सिंपल फॉर्म बीएमडी बाय डेक्सा. अगर आप इंटरनेट पे जाएंगे, बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल हैं रिगार्डिंग बोन हेल्थ. यू पुट माय नेम, यू विल फाइंड अ वेरी ब्यूटीफुल वीडियो व्हिच हैज अबाउट 6-7 मिलियन हिट्स. आप देखेंगे तो आपको मालूम पड़ जाएगा. क्या बात है. गो थ्रू इट. Okay, sir. Next sawal is from Dinesh Kumar from Jodhpur. Wanted to know what is the way to treat urinary bladder cancer and what precautions should we take? See, it's a lot of stages in urinary bladder cancer. So early stage can be treated by endoscopically, and advanced stage has to be operated. We have to remove the bladder. So in a short, यही 2 चीजें हैं इसके अंदर. तो सुप्रिया अग्रवाल फ्रॉम नोएडा, मैं आपसे सीधा ही पूछ. सुप्रिया अग्रवाल फ्रॉम नोएडा is asking how to control uric acid. Uric acid. How to control uric acid? That's the question. हाँ जी. So to a large extent, you can control by dietary modification. कुछ चीजों में यूरिक एसिड हाई है, प्योरिन रिच फूड बोलते हैं हमको. कुछ कॉमन हिंदुस्तानी आइटम्स जो हैं
वो खाने में कम कर दीजिए, बंद मत करिए, कम कर दीजिए। सफेद चने हैं, राजमा है, भिंडी है, नॉन वेजिटेरियन फूड है लाइक रेड मीट है, मटर है, गोभी है, अल्कोहल है और खास करके बियर है, इन सब में बहुत हाई, रेड वाइन है, इनमें ज्यादा हाई कंटेंट है, कम कर दीजिए इनको। अगर उससे बात नहीं बन रही है आपकी और यूरिक एसिड जमा हो रहा है जोड़ों में, सिम्टम्स आ रहे हैं, तो फिर दवा चाहिए। यूरिक एसिड कम करने की दवा होती है। और एक बहुत कॉमन मिस्टेक लोग करते हैं, यूरिक एसिड हाई हुआ, दवा खाई, कम हो गया, टेस्ट कराया, छोड़ दिया, फिर दोबारा सिम्टम हो गए। सो यू नीड टू बी अंडर केयर ऑफ ए डॉक्टर जो आपको दवा से कंट्रोल रखेगा, प्लस डाइटरी प्रिकॉशन जो मैंने आपको बताई। ओके, लास्ट क्वेश्चन एंड फ्रॉम आवर जितने भी लोग देख रहे हैं, थैंक यू फॉर सेंडिंग द क्वेश्चंस। और ये लास्ट सवाल है, Kanyalal from Ullasnagar wants to know, after hospitalization, when our base policy amount is over, then how can I get amount from top-up policy? Please explain. तो top-up policy जो होती है, as you have rightly said, there is a base policy. मान लीजिए आपकी base policy है 10 लाख की और top-up policy है 90 लाख की, तो टोटल 1 करोड़ हो। तो अगर बेस पॉलिसी अगर एक कंपनी से है और टॉपअप दूसरे से, तो हेल्थ इंश्योरेंस के एक बहुत बड़ा सर्विस नहीं मिल सकता, वो है कैशलेस। और कैशलेस मतलब आप हॉस्पिटल के ट्रीटमेंट लिए, आप वापस आ गए और इंश्योरेंस कंपनी डायरेक्टली हॉस्पिटल को पे करेगी, वो मुश्किल हो जाता है। लेकिन अगर आपका बेस पॉलिसी और टॉपअप पॉलिसी सेम इंश्योरेंस कंपनी से है, तो आप पूरे 1 करोड़ तक का जो एग्जाम्पल मैंने दिया उसमें आप कैशलेस ले सकते हैं। तो जब आप टॉपअप ले रहे हैं तो कोशिश कीजिए, अगर अच्छी पॉलिसी, अच्छी प्रोडक्ट है आप उसी कंपनी के पास जिससे आपने बेस लिया है, तो कोशिश करें उसी से ही टॉपअप लीजिए, ताकि आपको दोनों में कैशलेस मिल पाए। अदरवाइज आपको बेस का पैसा हॉस्पिटल में कैशलेस मिल जाएगा, बाकी उसके ऊपर का खर्चा आपको रियम्बर्समेंट में क्लेम करना पड़ेगा। मतलब सारे डॉक्यूमेंट दूसरे कंपनी में भेज के थोड़े दिनों बाद वो आपके अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। ओके, एक्चुअली बहुत सारे सवाल हैं और हमारे ऑडियंस ने बहुत सारे क्वेश्चंस भेजे हैं, बट वी हैव टू लीव सम ऑफ देम बिकॉज आप लोगों का टाइम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बट इट हैज बीन अ वेरी वेरी informative session for me also and for all the people who are watching, and it was a lot of fun. Thank you so much, Dr. Arora, Dr. Nader and Dr. Mishra for taking out your valuable time and giving us such great learnings. And thank you to our audience for being such a great audience. And I just want to say कि ऐसे और सेशंस अगर होंगे और इंफॉर्मेशन अगर हमारी ऑडियंस को मिलेगी, हम सबको मिलेगी, तो आई थिंक जितने भी प्रॉब्लम्स हमने आज डिस्कस किए वो धीरे धीरे कम हो सकते हैं। व्हाट डू यू गाइस से? Absolutely. And thank you, Ranvijay. You've been fabulous as well. Thank you very much. So thank you, everybody. Thanks a lot. It has been a great session, and we enjoyed it. Ranvijay made it very, very simple and very, very enjoyable. I just want to say, stay tuned to Niva Bupa handles for more updates on the upcoming sessions. And thank you so much, guys. Stay safe and just keep up the good work, sir. आपका तो मैं अभी YouTube channel जाके पूरा छानने वाला हूँ। Bye. मॉडल भी लेके आऊंगा। Thank you, Dr. Arora. Thank you, Dr. Nader. Thank you, sir. Thank you, Dr. Nader. Thank you. Bye, everybody. Thank you, Dr. Mishra. Bye, guys. See you.